Hello friends, welcome to my channel Vidya tutorial. Friends, please subscribe my channel, like my video and share my video with your friends. Students, now we discuss about mainstreaming in education. Now we discuss about meaning of mainstreaming. The word mainstreaming comes from the concept that students with disabilities can be incorporated into mainstream of education instead of placing them in separate classrooms and giving them completely separate instructions. So mainstreaming में डिसेबल्ड चिल्ड्रंस को मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में या जनरल क्लासरूम सिचुएशन में इन्वॉल्व किया जाता है एंड उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का सेपरेट क्लासरूम्स की या सेपरेट इंस्ट्रक्शंस की अरेंजमेंट नहीं किया जाता है। उन लोगों को जनरल स्टूडेंट्स की तरह ही जनरल एजुकेशन सिस्टम में और जनरल स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। In other words, mainstreaming involves placing a student with a disability in a general education classroom with a special education teacher as a co-teacher or with an assistant who knows the child. So in mainstreaming, disabled children को general classroom situation में placement किया जाता है with a special educator or with a special teacher who is worked as a co-teacher or with an assistant who knows the unique requirements of the child. The primary purpose of mainstreaming is to include students with disabilities within the traditional classrooms while giving them the same opportunities as other students to access instruction, gain knowledge, grow as an individual and to participate in the academic and socializing environments that a school has to offer. So the primary purpose of the mainstreaming is to placement the disabled children in the traditional classroom situation and provide them the same educational opportunities that are provided to the normal students so that they can access the same instruction which was accessed by the normal children and gain the same knowledge which is gained by the normal students and grow as an individual in the society like the normal students, and they can also motivated to participate in the academic activities like the normal students and also socialize themselves like the normal individual in the school environment. Mainstreaming improves academic achievement, self-esteem and social skills among disabled children. सो मेनस्ट्रीमिंग के माध्यम से जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी एकेडमिक अचीवमेंट में इम्प्रूवमेंट होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम एंड सोशल स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होता है और उन लोगों के मन में उनकी डिसेबिलिटीज़ को लेके किसी भी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं होता है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग. नंबर 1 इज इंटीग्रेशन, number 2 is educational planning and programming, and number 3 is clarification of responsibilities. Now we discuss about integration. A vital part of mainstreaming is social and instructional integration that allows a child to participate in the regular class without being frustrated. mainstreaming का मेन मोटो होता है सोशल एंड इंस्ट्रक्शनल इंटीग्रेशन, जिसके कारण जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो रेगुलर क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट बीइंग फ्रस्ट्रेटेड. उन लोगों के पास कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है और ये लोग अपनी जो डिसेबिलिटीज होता है उसको पॉजिटिवली लेते हैं और इन लोगों के पास कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं होता है. द एक्सेप्शनल चाइल्ड्स इंस्ट्रक्शन शुड बी डिजाइन्ड सो दैट ही टेक्स पार्ट इन एक्टिविटीज़ with normal peers without experiencing any difficulty in him. So जो exceptional children की जो instructional method होता है उसी तरह डिजाइन होना चाहिए ताकि जो disabled children होते हैं उन लोगों को कोई difficulty फील नहीं होगी और वो लोग आसानी से समझ पाएंगे.
The percent of the school day that the child is placed in the regular class must be considered. And the larger the percent of the day the child is integrated, he is better accepted by his peers. So एक डिसेबल्ड चिल्ड्रेन को कितने परसेंटेज ऑफ डे हम एक नॉर्मल क्लास में इन्वॉल्व करेंगे वो पहले से ही डिसाइड होना चाहिए. एंड द लार्जर द परसेंट ऑफ डे वी इन्वॉल्व द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन इन द नॉर्मल क्लास, ही इज बेटर एक्सेप्टेड बाय हिज पीर ग्रुप्स. Then point number 2, educational planning and programming. The educational program of the mainstreamed child need to be planned carefully. जो mainstreamed children होते हैं उन लोगों का educational program को carefully planned होना चाहिए and special efforts must be made to plan the program for the unique needs of the exceptional children so that they can achieve the maximum benefits of participation in the regular classroom. So जो exceptional children होते हैं उन लोगों को जो special needs होते हैं, special requirements होते हैं, उस unique needs को और special requirements को fulfill करने के लिए पहले से ही proper way से planning होना चाहिए और planned program होना चाहिए so that they can be more benefited in the general classroom. For this, supportive personnel and services should be provided both the child and the regular class teacher. So उन लोगों के लिए special supportive personnels की and special services की arrangement होना चाहिए. The third point is clarification of responsibilities. Although in some mainstreaming situations, the regular teacher must assume total responsibility for the exceptional child, ideally additional special education personnel, that is resource teacher, may also be involved. Though in mainstreaming, the main responsibility is of the regular teacher, but there is a necessity of a special teacher or a resource teacher who knows the basic needs and requirements of the exceptional child. When both the special and regular education personnel are working together with the child, there may be confusion regarding their responsibilities. So mainstreaming में जब एक regular teacher and एक special teacher एक साथ काम करते हैं, so उन लोगों के बीच कुछ confusion होता है regarding their responsibilities towards the child. Thus, the regular teacher and special teacher must be absolutely clear about their responsibilities towards the child so that his or her total need can be met. So, mainstreaming में एक regular teacher की क्या responsibilities है और एक special teacher की क्या responsibilities है वो clear होना चाहिए so that वो लोग एक साथ अपने ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभा पाएंगे एंड दे कैन एबल टू मीट द नीड ऑफ द एक्सेप्शनल चाइल्ड. नाउ डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग मेन स्ट्रीमिंग. नंबर 1, लिटिल प्लानिंग एंड इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ जनरल टीचर्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन स्टैंड्स ऑन द वे ऑफ मेन स्ट्रीमिंग. सो जो जनरल टीचर होते हैं उन लोगों को एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और नीड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है. सो वो लोग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के जो यूनिक नीड्स होते हैं और रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जो कि मेन स्ट्रीमिंग के लिए एक प्रतिबंधक है. एंड ऑल्सो देयर इज लिटिल प्लानिंग इन मेन स्ट्रीमिंग. Then point number 2, most educators have not had sufficient training to be able to handle the mainstreamed children efficiently. Maximum educators के पास sufficient training नहीं होता है and they don't know how to handle the mainstreamed children efficiently. Point number 3, the exceptional children have a wide range of special educational needs. They varying greatly in intensity and duration in learning as compared to non-exceptional children, which is quite difficult
to accomplish in general educational setting. सो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों के पास वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल नीड्स होते हैं और रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि एक जनरल एजुकेशनल सेटिंग में फुलफिल करना काफ़ी मुश्किल होता है. एंड दे आल्सो डिफर ग्रेटली टू द नॉन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग एंड ड्यूरेशन इन लर्निंग. और ये लोग अपनी इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग में एंड ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग में काफ़ी पीछे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है टू accomplish his unique needs and requirements in general educational setting. So students, now we wind up our class. If you have any doubt, please ask me on comment box.